हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रिलिमिनरीज और इसमें हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शंस के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। और ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टडी कर रहे थे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करता हूँ। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी be a function, then f is said to be invertible if there exists another function g from b to a such that GOF is nothing but identity map on A and FOG is identity map on B. ठीक है, in short GOF of x is x for all x belongs to A, or FOG of x is equal to x for all x belongs to B. ठीक है, in that case we say G is a inverse of F and we write G is equal to F inverse. तो हम लोगों ने क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोगों ने स्टडी कर लिया। तो हम लोग फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो ये प्रूफ करेंगे कि ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ इट इज इन्वर्टेबल। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम दैट ए फंक्शन f from a to b is invertible if and only if f is bijective। ठीक है, सो एक एक करके प्रूफ करते हैं। लेट अस फर्स्ट अज्यूम लेट f from a to b be invertible, then there exists g from b to a such that GOF of x equal to x for all x belongs to A and FOG of x equal to x for all x belongs to B. What is our claim? What to prove? To prove f is bijective. It means we need to show that f is both on 1 and on 2. ठीक है, सो दिस इज आवर गिवन, होपफुली, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ। सो दिस इज आवर गिवन कंडीशंस। सो फॉर 1 f of x equal to f of y for some x comma y belongs to a। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास g एक फंक्शन है। लेट अस कंपोज दिस फंक्शन विद g। सो GOF of x is equal to GOF of y. This implies GOF of x is equal to GOF of y. Now what is GOF of x? Nothing but x. This is nothing but y. Therefore f is 1 1। समझ में आया?
लेट एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर कोई दो इमेज इक्वल हुआ देन देयर image under G must be equal because G is a function. Now geo f of x is nothing but geo f of x and geo f of y. Now geo f is an identity map on A. तो x जो है वो x पे मैप करेगा और y जो है वो y पे मैप करेगा. ठीक है. So this is f is 1 1. Now for onto case, let y belongs to b be any element. ठीक है. हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट x सच दैट y इज इक्वल टू g ऑफ y इक्वल टू f of x. ठीक है. सो y belongs to b and g is a function. G is a function from a to b. sorry from b to a. ठीक है. बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, स्पेस कम है इसलिए. ऐसा कोई बात नहीं है, स्पेस कम है तो कॉन्शियस के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ क्या लिख रहा हूँ. सो फाइन. सो b to a. So there exist x belongs to a so that x is equal to gy. Now if I compose this, means if I take f of x, then it should be f of g of y is nothing but f of g of y. This is nothing but y. Therefore y is equal to f of x. Means for every y belongs to b, there exists an x belongs to a such that y is equal to f of x. It means that the function is onto. Now the function is 1 1 and onto, इसका मतलब है f जो है वो bijective है. ठीक है. Now for converse part, conversely, let f be bijective. ठीक है. Then for every y belongs to b, there exists x belongs to a such that y is equal to f of x. ये हम लोग लिख सकते हैं. Now since f is 1 1, it follows that this x, that the x for which y equal to f of x is unique. Otherwise क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगा. If this is not unique, so you can easily check. Suppose इसके corresponding जो प्री इमेज है अगर वो यूनिक नहीं हो तो ऐसा केस आ जाएगा. Then the function is no longer 1 1 function. So ये x जो है ये यूनिक है. ठीक है. Knowing that this is unique, I can define a function. अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा इसको. We define
G from B to A by G of y is equal to x. ठीक है, where y is equal to f of x for some x belongs to A. As I have already told that this x is unique, means y is equal to f of x is also unique, means this map is well defined because y maps to a unique point x. Fine. Now it is enough to show that g of f is an identity map on A and f of g is an identity map on B. Now let us check first g of f. What is g of x? This is nothing but g of fx. Now this is nothing but y. So g of y. So by definition of g, this is nothing but x. So g of x is x. And this is same as writing identity map on A of x. So finally g of f is nothing but IA. But this line is true for all x belongs to A. So it's done. Now for FOG, FOG में क्या आता है? FOG में क्या आ रहा है हमारा? FOG of y हम लोग सिंबल के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है. सो बिकॉज हमको ये दिखाना है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स. सो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे y ले रहे हैं. इन रियलिटी मतलब इन रियलिटी इन द सेंस ये भी रियल है, मतलब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जो g बनाएंगे वो यहाँ पे x लिखेंगे और उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे. तो इस थियरम में हम लोग इस डेफिनेशन को दिखा नहीं रहे हैं. सो वी आर एक्सप्रेसिंग दिस बाय x. द डेफिनेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय x, द वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज y. जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो मैं दिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में, तब क्या होगा, इस y को हम लोग x लिखेंगे और इस तरफ उसका जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज. और ये मत समझिए कि हमको y है तो y कुछ और है, और यहाँ पे एज दिस इज अ जनरल थ्योरम, सो दिस एक्सप्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय दिस x. एंड क्योंकि यहाँ पे हमको जस्ट ये लिखना है, दिस y इज मैपिंग टू अ पॉइंट, दिस डिफाइंस अ पॉइंट. अब एक्चुअल प्रॉब्लम में पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द y इन दैट एक्सप्रेशन. तो वहाँ पे आप y लिखे और x लिखे, दैट डजेंट मैटर, वो सेम ही है, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ g ऑफ y. Okay, now g of y is nothing but x. Well, now what is f of x? Is nothing but y. So this is IB of y, because this line is true for all y. Oh sorry, all y belongs to B. So FOG is equal to IB. So g is a function from B to A for which g of f is identity map on A and f of g is an identity map on B. It means the defined function g is the inverse of A. It means f is invertible. ठीक है? Okay. Now come to the next theorem, an invertible function. If f from A to B and g from B to C is invertible, then g of f is
invertible and GOF whole inverse is F inverse OG inverse. ठीक है, तो पहले वाला जो है वो मैं मतलब लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है. लेट कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ. लेट F from A to B and G from B to C is invertible. So by our last theorem, F from A to B and G from B to C is bijective. ठीक है. Now composition of bijective function is bijective. Therefore, GOF from A to C is bijective. Again, by last theorem, every bijective function is invertible. It follows that GOF is invertible. ठीक है, इसका मतलब क्या है? GOF from A to B is invertible. So again, recap the steps. F from A to B, G from B to C is invertible. So by last theorem, both are bijective. Now composition of bijective map is bijective, means GOF from A to B is bijective. ठीक है, and every bijective map is again invertible, means this is invertible. So simple, very simple. जिसने भी मेरा लास्ट वीडियोस जो है वो देखा है तो ये उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया. ठीक है. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट मीन्स सेकेंड पार्ट, और यू कैन से द लास्ट पार्ट. इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल होगा मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इस इन्वर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. सो इट मीन्स लेट, अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, H इज इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स एंड K इज इक्वल टू H इनवर्स और G इनवर्स. कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ. दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम G इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? C to B एंड F इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? B to A. So F inverse or G inverse is nothing but a function from C to A. ठीक है. Now if you define this, suppose I have defined this by K of G of F is from A to C. So ये हमारा है मैप जिसको इन्वर्टेबल दिखाना है. So you have to find some, that by definition we have to find some G. So यहाँ पे मैंने इसको H में लिखा है. तो H from C to A ये रहा. अब सिर्फ ये आपको क्लियर करना होगा कि HOK is identity on A and KOH is identity on B. अगर ये आपका क्लियर हो गया तब बात करें. So let us check. So HOK of X is nothing but, you can write it, so ध्यान से देखिएगा इसको. ठीक है. This is nothing but
नाउ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट लाइक दिस, GO G इनवर्स OG, ठीक है। तो दिस इज FX. G inverse OG is nothing but an identity map. So this is nothing but F inverse of Fx. So this is nothing but F inverse OF of X. This is again an identity element. So this is identity map, sorry. So this is X. So HOK is X. And X is taken from A. Therefore, this result is true for all X belongs to A. It means HOK is an identity map on A. Similarly, अगर हम लोग KOH देखें तो KOH में ही KOH में क्या क्या होगा? ये आगे होगा, ये पीछे होगा. So you can similarly by this property, associative property, you can check that in a similar manner. Just H और G का पोजीशन जो है वो चेंज होगा. H नहीं, सॉरी, F और G का पोजीशन जो है वो चेंज होगा. So similarly you can show that KOH of X is nothing but X for all X belongs to C. So this is an identity map on C. So it means F inverse OG inverse is a inverse function on inverse function of GOF. इसका मतलब है GOF का जो इनवर्स है is nothing but ठीक है. तो this is the theorem. Now inverse of a function is unique. अगर किसी एक फंक्शन का इनवर्स आया तो वो यूनिक होगा. कैसे होगा? लेट f फ्रॉम A to B be an invertible function then the inverse function of f is unique. अगर हम पकड़े सपोज नॉट पकड़ के चले, then this implies there exists G1 from B to A and G2 from B to A such that FOG1 is equal to IB, G1 OF is equal to IA, FOG2 is IB, G2OF is IA. ठीक है, ये सारे जो है मेरे पास होंगे अवेलेबल. सो विल स्टार्ट. ठीक है, सो हम लोग कैसे स्टार्ट करें कि फंक्शनल वैल्यूज जो है वो सेम हो जाए. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज सेम, दिस इज आइडेंटिटी मैप ऑन बी, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैप ऑन बी. सो ये जो फंक्शन है ये दिस x इज इक्वल टू
दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ओ g1 ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ g2 ऑफ x। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। Now what is f? F is an invertible function. F is an invertible function and every invertible function is bijective. And every bijective function is again 1 1. So by 1 1 property, what can I write? What can I write? Let us rub this one. By 1 1 property, what can I write? That g1 of x is equal to g2 of x for all x belongs to b. What does this means? Two functions are there from b to a, means their domain is same, codomain is same, and from this line their functional value at each point of b means their domain is same. What does it mean? मैंने इक्वलिटी ऑफ फंक्शन समझाया था अपने जो पिछले वाले वीडियो हैं उनमें। सो बाय दैट definition of equality of function, these two functions must be same. It means inverse of a function if it exists then it must be same. ठीक है? So these are the three results related to invertible functions. In my next video I will discuss examples on invertible functions, मतलब हम लोग invertible function कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और एक इन्वर्टेबल फंक्शन होता है कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं ये बताना, और दूसरी बात है कि इसको निकालना इन्वर्स क्या है। फर्स्ट इज योर रियलाइजेशन, दैट इज, एंड देन योर एक्चुअली जो है, पहले तो इसको रियलाइज करना कि हाँ ये इन्वर्टेबल है। उसको कैसे करते हैं उसको तो मैंने आज बता ही दिया। इफ समथिंग इज इन्वर्टेबल मीन्स इट इज बाइजेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे, मतलब अगर हमने दिखा दिया कि ये बाइजेक्टिव है इट मीन्स इट इज इन्वर्टेबल। सो रियलाइजेशन पार्ट ये रहा, वो हम लोग एग्जाम्पल में मतलब दिखाएंगे। अल्टीमेटली दिस इज इट इज नथिंग बट टू शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जैसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करते हैं उसी तरह ही है, जिसको बाइजेक्टिव दिखाना है, और बाइजेक्टिव दिखा दिया मतलब ये इन्वर्टेबल है, बात खत्म, हाफ जॉब इज डन। नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ जॉब, जो इन्वर्टेबल है तो उसका एक इन्वर्स फंक्शन भी आएगा, उस इन्वर्स फंक्शन को कैसे निकालते हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट जो सामने जो वीडियो आएंगे उसमें। ठीक है, अप टू देन गुड बाय।